इस पर क्यों अविश्वास किया जाए मृत्युकालीन कथन पर? ये माननीय इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी बताया कि पति ने पानी डाला, पति ने आग बुझाई। माननीय ये उसके द्वारा उस समय कहा गया जब उसको लगा कि मेरे पति को झूठा फंसवा दिया है, तो अब मैं अपने पति को कैसे बचाऊं। तो उसने क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि पति ने आग बुझाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा मेरे ना रहने के बाद बच्चों का ध्यान रखना। और सर कोई एम्बुलेंस नहीं आई, क्योंकि ये सब ससुराल वालों के द्वारा झूठा बयान लेख करवाया गया है, जिसको पीडब्ल्यू। आप कितने दिन से हैं कस्टडी में? कितने दिन से कस्टडी में कितने दिन से हैं? सर मैं 4 साल से जेल में हूँ सर, और विचारण न्यायालय से भी मैंने सर 303 के थ्रू अपनी आर्गुमेंट करने के लिए मैंने निवेदन किया था, जिसको अमान्य कर दिया माननीय। आपको खुद कोई इंजरी हुई बुझाने के प्रयास में? जी सर। आपको खुद कोई बर्न इंजरी हुई जी बुझाने के सर, जी प्रयास? सर, मेरे फिंगर वगैरह जल गए थे बचाने में उनको। एमएलसी हुई है आपकी कोई? जी सर। कहाँ पर एमएलसी? क्या एग्जिबिट? सर उसकी एमएलसी सर मृतिका की एमएलसी है ऐसे सर, मत इसमें दिखाइए। बायां अंगूठा पूरा जला कौन सा प्रदर्श? आप अभिभाषक है ना, आपको मालूम है प्रदर्श मार्क हुआ होगा अगर एमएलसी हुई होगी तो। प्रदर्श कौन सा है बताइए? न्यायालय के सामने क्या साक्ष्य आई जिससे ये ज्ञात होता हो कि आप पत्नी को बचाने के प्रयास में आप खुद भी आहत हुए थे? इस मनन कथन में सर उसने सेल्फ कहा है, उसने पानी से बचाने की बात कही, पानी डालने की बात जी कही सर। है। न्यायालय से आपका प्रश्न, आपसे प्रश्न ये है कि क्या बचाने के प्रयास में आप आहत हुए थे? आप जी कह रहे हैं कि हम भी आहत हुए थे। जी माननीय। इस संबंध में साक्ष्य क्या है न्यायालय के समक्ष? इसमें सर साक्ष्य है कि PW4 नाबालिग साक्षी मेरा बेटा, और PW11 नाबालिग साक्षी मेरी बेटी 11 साल, इनने घटना देखी, जो चश्मदीद गवाह है। मेडिकल एविडेंस है कोई साक्ष्य? एमएलसी हुई हो, आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ हो बर्न इंजरी के लिए? सर मुझे एडमिट कर रहे थे, लेकिन मैंने सर वहां से छुट्टी लेकर और मैं पत्नी को पैसों के लिए व्यवस्था करने गया कि पत्नी का इलाज करा लूंगा। क्या कोई इसकी मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड पर है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट। है। माननीय फ्री है। यस, विच एग्जिबिट? कौन सा प्रदर्शन है बताइए? जी आराम से देखिए, हड़बड़ाइए मत, जी। बिल्कुल इत्मीनान से देख के बताइए। High Court has discussed about the Mphighcourt in para 52. पैरा 52। Exhibit P28. ये डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा खुद भी जला हुआ था। डॉक्टर उमेश मिश्रा deposed that he himself was last week. Who argued? I don't remember. We converted into 304 part 2 Yes, sir. In the final hearing matter. in the final hearing matter, and he is already in jail for 4 years. My lord. कोई कस्टडी रिपोर्ट है? इसमें जजमेंट में दिया हुआ लास्ट में पैरा 61। पैरा 61 17/7/2019 से नहीं, पैरा 51 61 में 17 61
17 9 19 से कितने साल हो गए? 4 साल होंगे अभी। अभी जुलाई होंगे में होंगे जुलाई सितंबर में में, ऑलमोस्ट 4 years. ऑलमोस्ट। Yes, Mr. But the evidence regarding the DD has been discussed in para 32, my lord, Yes. where the deceased has clearly disposed, my lord. नंबर 3, Yes. कैसे जल गई? हमारे पति दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, किसी भी महिला के साथ घूमते थे, मुझसे कहते थे तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे पिता से 2 लाख रुपए 4 व्हीलर लेकर आओ। पति कल रात में शराब पीकर आया और फोन लगा रहा था। हमने पूछा किसको लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या मतलब हम कुछ करें, तुम कुछ करो, हमें मतलब नहीं, चाहे भाग जाओ या मर जाओ। मेरे पति ने मेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। सर एक कोष्टक लगा हुआ है तहसीलदार महोदय जी की थोड़ा भाषा। शांति रखिए, इनको कंक्लूड करने दीजिए बहस. Then, my lord, the High Court has also appreciated the evidence regarding the DD and other circumstances in para 54. What is your response to our observation that recently in a case of this nature where the husband himself tried, My lord, incident has taken place in sudden impulse. My lord. Some quarrel had taken place, My it lord. took an ugly shape. period of custody is very good, my lord. 4 years. It is almost 4 years. My lord. And we converted it into 3042 3042 or 1. Part 2. Part 2. So it is almost half of the custody considering that. In that case, since he has already undergone 10 years, we released him on that by converting it into 304 Part 2. The appellant is present in person, Shri Ajay Shukla for the state. आपकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन कौन सी है? रेगुलर बिल कौन सी देखें? बहुत सारी I think it is 2110, my lord. आइए नंबर 2110 of 22 filed under section 389 of such and such is taken up arising out of such and such. The appellant argued the matter in person and informed the court that he is enjoying parole and therefore able to argue the matter in person. Next, as per the prosecution story, the appellant poured kerosene on his wife and set her ablaze on 15/7/19. The dying declaration of the wife bracket में PW exhibit 14 was recorded. But the court below convicted the appellant and placed heavy reliance on the said dying declaration, relevant portion of which was reproduced in para 32 of the judgment. The appellant submits that he was falsely arraigned. Even as per the dying declaration, he out of sudden impulse and without there being any premeditation set her wife ablaze, and soon after realizing the gravity of it made Herculean efforts to save her, poured water on her, and in this course got himself injured. Reliance is placed on the statement of children who supported the said stand. In addition, in para 52 of the impugned judgment, the court below considered the statement of
Dr. Umesh Mishra and his report, wherein he stated that appellant brought his wife in an injured condition and he himself was having burn injuries. That considering the aforesaid, the appellant submits that necessary ingredients for attracting section 302 of IPC are missing. That the appellant is in custody. Appellant remained in custody from 17/7/19 to 27th February 21, the date of judgment, and from there again he is in custody. That he will complete almost 4 years in July 19. In July 23, July 23. The final hearing of this appeal is not possible in near future. That appellant's children are dependent on him. Thus, remaining jail sentence may be suspended. Shri Ajay Shukla opposed the prayer. We have heard the parties on this aspect. This court in CRA number 3327 of 13. Considering the aforesaid factual backdrop, we deem it proper to suspend the remaining jail sentence of this appellant for 50,000 ki bail ke diye. He shall get surrender after completion of parole and thereafter shall be entitled to get the benefit of suspension of sentence. He shall mark his presence before the ट्रायल कोर्ट सागर ऑन आपका पैरोल कब खत्म हो रहा है इसी महीने जी सर 25 तारीख 11th of September and further dates. In view of this order, appellant has not pressed IA number such and such है ना जितनी बाकी लिखी है कॉलेज में the same are disposed of. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।